Hello children, once again I welcome you to my YouTube channel. Today once again we'll be discussing about very important part of writing section, and that is diary entry. Although I have uploaded a video regarding this diary entry, but again I would like to summarize this topic to all of you so that you may have a clear idea of diary entry. As you are new in class 9th and this diary entry is first time you are going to be introduced with this, and you're going to study about diary entry for the first time, so we need to understand this topic very attentively, because this diary entry can make a difference in getting or in scoring good marks in the exam. So let us start this diary entry. First of all, let me tell you what is this diary entry all about. A diary entry is one of the most personal and informal category of writing. So first of all, my dear children, we should make it very clear in our mind that diary writing or diary entry is a very personal thing. It is not something that is going to be shared with others. It is something that will be only related to the writer. He is the writer, he is the reader. Very personal thing it is. And at the same time, it is a kind of informal kind of writing. It is not a formal kind of writing. It is something where you write what you feel, you write what is necessary according to you, and the language that is used is 100% informal. Diary entry is a personal note, a way of keeping a record of what happened or what you felt. So it is something where you keep a record of all the incidents that happened in your life, maybe some memorable incidents, or what you exactly felt about a particular incident. That all things, we normally enter in the diary. People make entries of their day's activities, opinions, or experience in their diary. Now people, they sometimes, some people, they have the habit of writing this diary where they include day-to-day activities. There are some people, they only mention the opinions, the views, or the experience in the diary. Some people, they only mention some memorable events or memorable incidents that happened in their life, in their diary. So it depends upon the people literally who are writing the diary entry. So once again I'll explain you, my dear children, diary entry एक बहुत ही पर्सनल चीज़, एक पर्सनल टाइप ऑफ राइटिंग है. और ये डायरी एंट्री बहुत लोगों की आदत होती है डायरी लिखने की. और डायरी में हम एक चीज़ विशेष तौर पे याद रखें कि डायरी एक फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग है, सॉरी. और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होता है? एक ऐसी प्रकार, एक टाइप ऑफ राइटिंग जहाँ पर हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बहुत ही इनफॉर्मल होता है. किसी भी तरीके से हम जो हैं फॉर्मल वे में बात नहीं करते. जैसे हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, एडिटर को लेटर लिखते हैं, या किसी कंपनी के हेड को लेटर लिखते हैं, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो काफ़ी फॉर्मल लैंग्वेज होता है. बट वाइल राइटिंग डायरी एंट्री वी यूज़ इनफॉर्मल राइटिंग, देन डायरी एंट्री में हम बेसिकली लिखते क्या हैं? हम अपना या तो डे टू डे रिकॉर्ड को लिखते हैं, दिन भर क्या हुआ हमारे साथ, या फिर जब कुछ खास या विशेष घटनाएं हमारे जीवन में कोई घटनाएं घटती हैं तो हम उसको डायरी में लिखते हैं. ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर. या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ बीतती है जो बहुत ही अलग है तो आप उस चीज़ को लिख सकते हो. तो ये डिपेंड करता है लोग कैसी कैसी चीज़ें अपनी डायरी में लिखते हैं. ठीक है. Set of rules. Okay, so now we'll focus on the aspect what important points we need to keep it in our mind while writing a diary. अब डायरी लिखते वक्त कुछ विशेष पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में बनाए रखने की ज़रूरत है. अगर हम इन बातों को अपने दिमाग में बनाए रखें
तो एक अच्छी डायरी एंट्री लिखी जा सकती है और अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए जा सकते हैं. So first of all, what we have to remember is mention day, date and time at the top left corner of the page. So there is a set of rules for writing diary entry, and the first and foremost rule is you have to mention the day, date as well as time at the top left corner of the page. Okay, I'll show you the format also. So you have to mention these three things, especially day, date and time at the top left corner of the page. So this is actually the beginning of a diary entry. You have to start with mentioning the day, date and time. Words like dear diary can be used. You can use this word, dear diary or hello diary or my loving diary. You can use whatever you can use. You can use, it depends upon you. Okay, तो आप डियर डायरी कहकर भी आप लिख सकते हैं. मेक ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ऑब्लिक इंसिडेंट्स. क्रोनोलॉजिकल मीन्स इन ए सीरीज. ओके, इन ए ऑर्डर. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जैसी जैसी घटनाएं घटती हैं उसके हिसाब से आपको ऑर्डर, अब एक ऑर्डर बनाकर रखना है आपको इंसिडेंट्स का. ऐसा नहीं कि जुलाई में कोई घटना घटी है तो आपने उसको लिख दिया और उसके बाद फिर जून में कोई घटना घटी थी फिर आपने जून में लिख दिया, फिर पता चला दिसंबर में कोई घटना घटी थी तो दिसंबर में लिखा. ऐसे नहीं लिखना है. या तो आप उसको सीक्वेंस वाइज लिखिए, पहले जो घटना घटी उसके बाद कौन सी घटना घटी उसके बाद कौन सी घटना घटी. उसी तरीके से अगर एक डे को ले लिया जाए, सुबह आपके साथ कुछ हुआ, दोपहर में आपके साथ कुछ हुआ, फिर शाम को कुछ हुआ, तो अब आप रात में डायरी लिखने के लिए बैठोगे तो ये नहीं कि पहले रात वाली घटना लिखोगे फिर सुबह की घटना लिखोगे फिर दोपहर की घटना. नो, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे. यू हैव टू मेंशन इट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, देन व्हाट हैपेंड इन द नून टाइम एंड देन व्हाट हैपेंड फाइनली एट नाइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इट. यूजुअली डायरी इज रिटन एट द एंड ऑफ द डे. अमूमन ये देखा जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि डायरी जितने भी लोग लिखते हैं वो रात में सोने से पहले डायरी लिखते हैं. जब उनका दिन खत्म होने वाला होता है, वो सोने जा रहे होते हैं, तब लिखी जाती है डायरी. ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरी अर्ली इन द मॉर्निंग लिखते हैं, लेकिन वैसे सही तरीका ये है कि एट द एंड ऑफ द डे डायरी लिखी जाती है. Write about your feelings in detail and explain why you feel that way. Another important aspect is while writing diary entry, you should be very honest towards your diary. Okay? What exactly you feel that must be written in the diary. There should not be any exaggeration, okay, of your feelings, or you are not supposed to exaggerate your opinions or ideas. What is the fact? What is the truth? That exactly you have to mention, and don't try to exaggerate it, otherwise it would look bit fake. ठीक है, डायरी लिखते वक्त चीज़ों को खींच कर बढ़ा चढ़ा कर लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. जो आप महसूस करते हैं, जो आपने महसूस किया है, ठीक हू बहू वही चीज़ को आपको डायरी एंट्री में लिखना है. और आपको अपने डायरी के प्रति बहुत ही ईमानदार रहना है. ठीक है, आप और गलत चीज़ें या फिर झूठी बातें या फेक चीज़ें आप उसमें नहीं लिख सकते. तो प्लीज़ मेक श्योर व्हाट यू फील दैट यू हैव टू राइट. Express the ideas in paragraph. Then another important aspect is whatever you write, please make sure that you write in paragraph. अब ऐसा नहीं कि पूरा right from the beginning to end आपने एक ही paragraph में अपनी बात खत्म कर दी. No, that is not fair and that is not a proper way of writing a diary entry. So make sure that you write your diary entry in paragraphs. आप अपने paragraph के अनुसार उसको जो है लिखिए. It should be brief and vivid. And another important aspect is whatever you write, it must be brief and vivid. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप खूब लंबा चौड़ा आपने डायरी एंट्री कर दी और ऐसा डायरी लिखा है आपने कि जो क्लियर नहीं है. विविड का मीन्स व्हाट? विविड मीन्स नॉट वेरी क्लियर. सो योर डायरी शुड बी इन सच अ वे कि इट शुड बी ब्रीफ एंड वेरी क्लियर, समझ में आए क्या लिखा है आपने. Write the diary in past tense unless and until the topic is related to the future. And then another important aspect is what? Whenever diary entry is written, it is always written in past tense. Okay, unless and until the topic is related to the future. तो जब भी आप डायरी एंट्री लिखें, आप स्वाभाविक है पास्ट टेंस में डायरी एंट्री लिखेंगे, हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर हमें डायरी एंट्री में हो सकता है प्रेजेंट के बारे में
लिखना पड़े या हो सकता है फ्यूचर के बारे में लिखना पड़े, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि अगले दिन आपको जो है एक फंक्शन में एंकरिंग करना है, एक फंक्शन को होस्ट करना है अपने स्कूल में, और रात में आप डायरी लिखिए कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो इन दैट वे यू कैन नॉट राइट इट इन पास्ट टेंस ना, तब आपको या तो प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा या तो फ्यूचर में लिखना पड़ेगा। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, बट in most of the cases it has been noticed that the questions are related to past tense. Then keep the word limit as per the question and conclude by signing the writer's name. Another very important aspect is whatever word limit is mentioned in the question, just stick to it. Okay, don't exceed that word limit. कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा डायरी एंट्री को एग्जैजरेट कर देते हैं कि वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। इफ द क्वेश्चन सेज 100 to 120 वर्ड्स, देन स्टिक टू इट एंड complete and end your diary before 150 words or 120 words, whatever the limit is. Then at last you will write your name. ठीक है, आखिरी में आप अपना नाम लिखकर conclude कर देंगे. This is actually a few points that you have to keep it in your mind before writing a diary entry. But इसको और अच्छी तरीके से हम तभी समझ पाएंगे जब हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है, डायरी एंट्री का. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट. As I told you earlier, what is the format of a diary entry? First of all, on the top left corner of the page, you have to write day and date. Okay, for day means, for example, it's Monday, you will write Monday, and date is, for example, it is 4 or 3 of August, then you will write 3 August 2020. So make sure that you mention the day and date on same line. Then in the next line you will mention the time. ओके, वट एवर टाइम इट इज़. तो जैसे कि हमने अभी भी देखा है कि अमूमन डायरी एंट्री जो है रात के समय लिखी जाती है, मतलब लोग जो डायरी लिखते हैं रात के समय. तो आप भी जब भी डायरी एंट्री लिखो क्वेश्चन में, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप रात का टाइम मेंशन करिए. मे बी 10, 10:30, 11, 11:30. ओके, ये टाइम आप हमेशा मेंशन करिए. 11:30 PM, 10:30 PM, 10 PM. ओके, देन लीव वन लाइन एंड देन कम सैल्यूटेशन. ओके, डियर डायरी. जैसे आप लिखोगे, सैल्यूटेशन तो नहीं लिखना, सैल्यूटेशन इज जस्ट टू शो यू दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, बट देयर यू आर नॉट सपोज टू राइट सैल्यूटेशन. ओके, रिमेंबर वन थिंग माय डियर चिल्ड्रन, इन डायरी एंट्री देर इज नो सब्जेक्ट, है ना. when you write a letter to the principal, when you write a letter to the editor, or in formal letters especially, formal letters, they do have this subject, in the format section. और सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है फॉर्मल लेटर्स में, लेकिन डायरी एंट्री चूँकि एक फॉर्मल राइटिंग नहीं है, वो एक इनफॉर्मल राइटिंग है, इसलिए सब्जेक्ट डायरी एंट्री में नहीं होती. ये इस बात का याद रखिएगा. सो आप डियर डायरी लिखोगे और देन यू विल स्टार्ट योर डायरी एंट्री. देन यू विल राइट योर डायरी एंट्री इन पैराग्राफ्स, इन मोर देन 2 पैराग्राफ्स और 1-3 पैराग्राफ्स, whatever according to the question. And at last on the left corner, bottom, आप क्या लिखोगे, सिग्नेचर ऑब्लिक नेम ऑफ द राइटर. मीन्स आइदर यू राइट योर नेम or you put your signature, but don't put your signature. Signature doesn't mean that you have to sign in such a way that it is unable, it is difficult to recognize. So it's better to write your name properly and clearly, and the name that is used in the question. If the question says that you are so and so, then you have to mention that name. Otherwise you mention something else, or your real name, or XYZ. That also you can do. ठीक है, तो ये actually this was the format of diary entry. So now we will see one example and then we will get a clear idea of diary entry. So one example is there in front of us. You are Nikita. Your school organized an excursion to Amritsar and Wagah border. Write a diary entry about your visit in 100 to 120 words. So you are Nikita. कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया जाता है, कि आप बस सीधा लिखा रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल, रिमूव दिस पार्ट, यू आर निकिता, सिंपली यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्शन, ऐसे लिखा हुआ है. तो ऐसे केसेस में आप या तो अपना रियल नेम आखिरी में लिख सकते हैं, या फिर आप XYZ कर भी लिख सकते हैं. लेकिन इफ़
and a particular name is given in the question, then only and only that name is supposed to be written. ठीक है, फिर वही नाम आपको लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है. तो क्वेश्चन में निकिता है तो सारे बच्चे जो भी होंगे वो निकिता ही लिखेंगे. सो यू आर निकिता, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्शन. अभी क्या हुआ है कि आपके स्कूल की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रिप था, एजुकेशनल टूर पर आप गए. कहाँ गए? स्कूल आपको कहाँ ले गया? अमृतसर एंड वाघा बॉर्डर. वाघा बॉर्डर क्या है? जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है. ठीक है, अब आपको अपने डायरी में लिखना है कि आपका सफ़र कैसा रहा, क्या क्या आपने देखा और कैसा लगा आपको. ये सारी चीज़ें यू हैव टू राइट इट इन द डायरी. अब ये जो घटना थी ये बीत चुकी है. इट इज़ समथिंग दैट इज़ इंसिडेंट ऑफ पास्ट, सो यू विल राइट इट इन पास्ट टेंस. ओके, now we will see this question. See, first of all we have mentioned the day and date, Thursday 8th October 20. बहुत से बच्चों ने ये भी पूछा कि सर ये लास्ट में 20 के बाद हम XX क्यों लिख देते हैं ईयर में. तो बिल्कुल आप 2020 लिखिए, 2019 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप 20 और XX भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन यू. सो दिस इज व्हाट डे एंड date is. Then in the next line you will mention the time. You can see that what time is mentioned, 11:30 p.m. In the beginning itself we read that usually diary is written at the end of the day, ना दिन खत्म होने पर सोने से पहले लिखा जाता है. So that is why the time is mentioned 11:30 p.m. Now let's start. Dear diary. Okay, today we went to visit the Golden Temple and Wagah border from school. ठीक है, so now see my dear children, when we write a formal letter, okay, कभी आपने देखा होगा जो फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल को लिखें या किसी को भी लिखें, तो हम बड़े फॉर्मल वे में लेटर को स्टार्ट करते हैं ना. जैसे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली या दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, आई बेग टू से दैट, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर. ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी तारीफ़ करते हैं, थोड़ी सी एक भूमिका बनाते हैं ना. वी क्रिएट ए प्लेटफॉर्म सो दैट इट मे गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑन दैट रीडर. बट वाइल राइटिंग दिस डायरी एंट्री यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट इन दैट वे. क्योंकि ये एक पर्सनल चीज़ है, तो आप एकदम डायरेक्ट अपनी बात स्टार्ट करिए. कोई फॉर्मल उसमें जो है इंट्रो की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट have you written? Today we went to visit the Golden Temple and Wagah border from school. आपने बताया कि हम स्कूल की तरफ से हम गए, विजिट किए. It was a 6-hour drive from Delhi. हम 6 घंटे का सफ़र था दिल्ली से. But we did not feel tired as we were all playing games and enjoying throughout the journey. लेकिन 6 घंटे का सफ़र था, लेकिन बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, क्योंकि रास्ते भर हम खेलते गए और मस्ती करते हुए रहे. रास्ता भर पूरा सफ़र जो था हमने बड़ा ही एंजॉय किया. We reached the Golden Temple around 9 a.m. और हम कितने बजे गोल्डन टेम्पल पहुंचे? 9 a.m. We were amazed to see the neatness and the discipline inside the temple. Okay, so when we went there, we were amazed to see the neatness and the discipline that was inside the temple. After walking around for some time, we were all hungry. We ate a simple but delicious lunch from the langar. है ना, लंगर क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक जहाँ पर सबको भोजन दिया जाता है ना, एनीबडी कैन गो एंड ईट, दैट इज कॉल्ड लंगर. सो हमने वहाँ पर भोजन किया. वी फेल्ट ब्लेस्ड व्हेन वी एंटर्ड द श्राइन. ओके, सो श्राइन मीन्स दैट होली प्लेस, दैट गोल्डन टेम्पल इज ए होली प्लेस. ओके, सो हम जब वहाँ पे गए तो हमें लगा कि वी आर लिटरली ब्लेस्ड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज देयर. सो दैट इज व्हाट वी फेल्ट देयर. The temple truly is a symbol of human brotherhood and equality. और बिल्कुल वो जो टेम्पल है वो किस बात का सिंबल है? इक्वालिटी का. वहाँ पे सब बराबर हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है, भाईचारा वहाँ पे देखने को मिलता है. एंड आफ्टर दैट वी लेफ्ट फॉर वाघा बॉर्डर बाई 2 p.m. एंड रीच देयर बाई 4 p.m. और उसके बाद वहाँ से हम कहाँ चले गए? इंडो पाक बॉर्डर पर चले गए. 2 बजे वहाँ से निकले एंड वी रीच्ड बाई 4 p.m. just in time to witness the military practice done since 1959 and the flag lowering ceremony. So most of you might not be knowing this fact. ये जो वाघा बॉर्डर है वहाँ पर 1959 से ही
अभी तक जो है एक मिलिट्री प्रैक्टिस चलती है, एक प्रकार का जो है मिलिट्री के, जो इंडिया के भी मिलिट्री के जो जवान होते हैं और पाकिस्तान के भी जो जवान होते हैं, वो एक प्रकार का जो है प्रैक्टिस करते हैं इस बॉर्डर पर, तो आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद फ्लैग शाम होते ही जो है फ्लैग उतार दिया जाता है, उसको ना, उसको लोअरिंग सेरेमनी कहा जाता है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पे बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। सो यू ऑल्सो विटनेस्ड ऑल दीज थिंग्स। वी जॉइंड इन अलॉन्ग विद द थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स हु वर गैदर्ड देयर एंड sang एंड डांस्ड टू द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है कि वो सब देखकर इतना ज़्यादा आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागने लगेगी, तो लोग वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगते हैं, भारत माता की जय बोलने लगते हैं और देशभक्ति के गीत गाने लगते हैं। सो दैट ऑल थिंग हैपेंड देयर। The entire event created a patriotic fervor in the crowd. और पूरा माहौल जो था वो देशभक्ति से भर गया था। It was a great feeling and one of the best excursions that I have been a part of. और ये अभी तक का एक बहुत ही अच्छा मेरा एजुकेशन ट्रिप रहा है और it was a great feeling being there. Now after that you have to mention your name. सो ये सब नहीं लिखना आपको, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, नथिंग, सिंपली यू हैव टू राइट योर नेम. सो माय डियर चिल्ड्रन, इफ यू हैव नोटिस्ड द टेंस दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस डायरी एंट्री इज पास्ट टेंस. हमने पूरा पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आप दिन भर घूम के आए, रात में आप डायरी लिख रहे हो, तो जो कुछ दिन में बीता वो सब पास्ट हो गया, तो आप जो डायरी लिख रहे हो इसलिए आपने पास्ट टेंस में लिखा. सो दिस वॉज एक्चुअली just an idea about diary entry. Or the best part is to practice. If you practice writing these diary entries, that would help you literally. So still, if you have any confusion, you can ask me in the comment section and I'll be helping you out. Any queries, please feel free to ask me, and please keep on practicing these diary entries, and that would help you a lot. And that was all from this video. Thank you, take care, and God bless you.